Hello and welcome to Political Adda, a weekly show by the Print's political team where we discuss and dissect an important question in today's Indian politics. Now, a trend that we have seen for the last many years is this sense of animosity and a face-off between state CMs and their governors. And the recent examples of this that have come up in the past few months, in the past few days, has been between Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and the governor there, Mr. Arif Mohammad Khan. Then we have the incident of Tamil Nadu Chief Minister Mr. M.K. Stalin and the governor there, Mr. Ravi. And we also have the incidences of Jharkhand, where GMM Chief Minister Hemant Soren has been having a face-off with the governor there, Mr. Ramesh Bais. Now, this is not something that is very recent. We have seen previous examples of this with Mamata Banerjee in West Bengal and Jagdeep Dhankar, who of course now is Vice President but was earlier Governor of Bengal. And what we'll be discussing today, the question that we're discussing today, is why it seems like governors in the recent times are getting under the skins of state chief ministers. Now, joining us for the discussion today is Shankar Ramesh from our political team, Shashi De, who is in Calcutta and is our correspondent for West Bengal, and Soumya Ashok, who is in Chennai and is our correspondent for Tamil Nadu. So, Shankar, पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि ये भी एक बात है कि ये हमको लगता है नया फिनोमेना है, मे बी बिकॉज मीडिया रिपोर्टिंग उस तरीके से अभी हो रही है, बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें फॉर द रूलिंग डिस्पेंसेशन जो भी सेंटर में रहा है, द पोस्ट ऑफ द गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल टूल इन सम वेज फॉर द सेंटर टू एक्सरसाइज देयर पावर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली इफ इट्स एन ऑपोजिशन गवर्नमेंट. तो उसका थोड़ा अगर आप कॉन्टेक्स्ट दे सके कि हिस्टोरिकली हमने मतलब ये क्या देखा है, हिस्टोरिकली क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट. बिल्कुल इशादिता, चूँकि हम जिस एरा में जीते हैं और जिस तरह की मीडिया कन्वर्सेशन नैरेटिव को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी फिनोमेना है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने जितने भी गवर्नर बनाए वो खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट में इंटरवीन करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, मुख्यमंत्रियों को चैन से जीने नहीं देते. लेकिन मैं एक डेटा लाया हूँ. ये डेटा ये कहता है कि पूरे देश भर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो कुल मिलाकर 132 बार लगा है इस पूरे देश में, और जिसमें कि कांग्रेस जिस समय शासन में थी वो 88 टाइम्स यानी कि 88 बार कांग्रेस ने प्रेसिडेंट रूल लगाया स्टेट में. और मिसेस गांधी तो इस बात के लिए नोटोरियस थी कि वो राज्यों में सरकार को गिराना उनकी फितरत थी, और 17 साल के शासन में 51 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल उन्होंने इम्पोज किया होगा स्टेट में. अब अगर इस लिस्ट को देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 7 बार प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल किया. शास्त्री जी ने 1 बार इस्तेमाल किया. इंदिरा गांधी ने 51 टाइम्स इस्तेमाल किया. इसके बाद मोरारजी भाई ने 17 टाइम्स इस्तेमाल किया. और खास करके देखिए, जो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी का विरोध करके, जनता पार्टी इमरजेंसी का विरोध करके सरकार में आए थे, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस रूल्ड 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया. इंदिरा गांधी जब दोबारा 1980 में लौट के आई तो इंदिरा गांधी ने टिट फॉर टैट करते हुए फिर से 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया जो कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट थे. तो इस तरह से सारे प्रधानमंत्रियों ने इस जिसको कहते हैं 356 गवर्नर की जो संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको मिसयूज किया है. तो अभी जो एक सेंस है कि गवर्नर ज़्यादा अग्रेसिव है मोदी सरकार में, ये क्यों? इज इट बिकॉज दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर वाकई में रवैया जो होता है गवर्नर्स का उसमें ज़्यादा अग्रेशन दिखा है पिछले कुछ सालों में? आपको याद होगा कि 2005 में वो बड़ा ऐतिहासिक किस्सा है कि बूटा सिंह गवर्नर हुआ करते थे बिहार के, और उन्होंने जो इलेक्शन हुआ बिहार का असेंबली इलेक्शन, उसमें जो मैंडेट मिला उस पर उन्होंने कहा, यूपी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि ये जो मैंडेट है बड़ा ही फैक्चर्ड है, और उस पर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाने की सिफारिश की. और कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे. कलाम साहब विदेश के दौरे पर थे. उन्हें रात के 11 बजे उठाया गया क्योंकि कैबिनेट ने रिकमेंड कर दिया था वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए. और कलाम साहब ने पूछा फिर जो यहाँ के लोग थे कि क्या ये ज़रूरी है, तो रात में उन्हें उठा करके
लिए उनसे साइन कराया गया और बाद में जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, हिस्टोरिक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह से गवर्नर की संस्था का मिसयूज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। आप देखें कि बूटा सिंह का केस हो या फिर शिवतेरजी, झारखंड की बात कर ले, शिवतेरजी गवर्नर हुआ करते थे यूपीए के दौरान। वहां पे अर्जुन मुंडा ने क्लेम किया कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन शिवतेरजी ने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कराना पड़ा कि किसके पास बहुमत है ये साबित करने के लिए, और फाइनली ये साबित हुआ कि अर्जुन मुंडा के पास में बहुमत है। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और राज्यपाल की संस्था पे सवाल उठाए। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो देखने का नजरिया है, वो जो चश्मा है, उनको लगता है कि ये सब तो पहली बार हो रहा है, गवर्नर की संस्था का मिसयूज तो पहली बार हो रहा है। इंदिरा गांधी वो सब काम 70 के दशक में कर चुकी हैं। उन्होंने जितनी सरकारें गिराई होगी उतनी सरकार गवर्नर के द्वारा नरेंद्र मोदी ने भी नहीं गिराया। नरेंद्र मोदी ने ये काम जरूर किया, अमित शाह ने काम किया, उन्होंने एक नया मॉडल खोजा है। वो नया मॉडल क्या है कि किस तरह से विधायकों को रिजाइन कराओ और विधायकों के रेजिग्नेशन के बाद फिर वहाँ पे बाईपोल हो और उसमें वो सारी जो बाईपोल में कैंडिडेट जीते। तो एक नई व्यवस्था उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने राज्यसभा में भी इसको इम्प्लीमेंट किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, हर एक स्टेट में करते हैं। लेकिन गवर्नर से सरकार गिराने की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ 2 राज्यों में उन्होंने किया, उत्तराखंड और अरुणाचल में। बट द फैक्ट रिमेन्स, एज वी वर डिस्कसिंग, दैट the DMK's opposition to the post of the governor is, it precedes Mr. Ravi and Mr. Stalin. So if you could talk a little bit about that and give us that context. Absolutely. So the DMK has ideologically been opposed to the post of governor. They always think in a democratic setup, in a setup where a state government has been democratically elected, why do you need a constitutional post like this from the center overseeing the state's functioning? So historically, if you go back, there have been several instances, including Mr. Nadu, who was one of the founders of the DMK, saying a governor's post is as useless as a beard on a goat. I'm paraphrasing from Tamil, but this was something that was said in the past. And over the course of many years, the DMK itself has been a victim of governor's rule. So both in 1976 and 1991, you had situations where, based on the recommendation of the governor, the ruling DMK party, the government was sort of dismissed. And they successfully, in 2001, managed to remove the governor from the post. The governor then was Fatima Bibi. And they had a problem with her swearing in Jayalalitha as the chief minister at the time when she had a corruption case against her. So there have been instances of a face-off back and forth over the course of many years of the DMK and the governor's post. But what we see in this context is, I think, a very specific line against, what the DMK thinks of as the center's politics or the Hindutva sort of forces coming into the state. So if you look at just the last year, Mr. Ravi was appointed governor of Tamil Nadu on September 18th last year. So he's been in office for just over a year. And he started with opposing what the DMK sees as a very important bill, which is the anti-NEET bill. So they want exemption for Tamil Nadu, for students to not have to take this particular examination to get into medical colleges, because they think it goes against social justice. So from the time which they introduced the bill, which was just before he was appointed, he sat on it for almost 4 or 5 months, dismissed it. The DMK reenacted the bill, came back to him and said, you'll have to send it across to the president for approval. And it was only in May this year that he finally did that. So there's always been, from that point onwards, a sort of clash between the two from the word go on multiple things, especially when it comes to education. And in the last 6 months, just in the way in which Mr. Ravi has been making statements, the DMK has been opposed to the ways in which they say he's promoting Sanatana Dharma, the way in which he's promoting an unequal sort of society, when Tamil Nadu is based, and Tamil sort of governments and governance, the Dravidian model is based on one of social justice. So now it's become more an opposition to the political statements that he's made over the course of especially the last 6 months.
And very, very recently, including in the last few days, there's been an active plea. So they have invited people from the sort of secular alliance, the progressive alliance that the DMK leads, to say, let us write a petition to the president to actually get Mr. Ravi to be dismissed as the governor. So that's where we're at, where we actually have a plea in place where the DMK is inviting its allies to come and sign a sort of a plea to forward it to Delhi. So this is the sort of state of affairs at the moment. Okay, and I think this is a good time to bring in Shreyashi. So, Shreyashi, like we both reported out of Bengal, and there was a time when Mr. Dhankar was governor, when private WhatsApp messages between him and Miss Mamata Banerjee would be put up on Twitter, when private letters would be put up on Twitter. We would know, 1 minute phone calls and what was happening there. And at that time, when Mr. Dhankar was there was a very clear animosity between the Chief Minister and him. And the Trinamool Congress made no qualms about saying very clearly that he is the BJP's man there. Cut to now, when we see, Mr. Ganeshan has taken over that position after Mr. Dhankar, of course, was made Vice President, we see that Mamata Banerjee came down to Chennai to attend the family function of the governor. So, between then and now, when you see the relationship between the governor's office and the chief minister's office, what is the difference, and why do you think that is, in terms of the relationship Mamata Banerjee had with Mr. Dhankar and what she has with the governor now? Well, of course, in West Bengal, if we see the relationship between the governor and the chief minister, it has been extremely tense. And it had somewhere started with Keshrinath Tripathi when he was just about going to complete his tenure as the governor of West Bengal. But of course, it reached the heights during Jagdeep Dhankar's tenure here in West Bengal. We've seen the Trinamool Congress approach the president for his dismissal. They had also written to the prime minister for his dismissal. There was a video of back then when Sudip Bandyopadhyay himself went up to the speaker and raised this issue that the state government was having with the governor. And of course, we did see the kind of Twitter war between the chief minister and the governor, which ended up with Mamata Banerjee blocking the governor of West Bengal on the social media, which was one of a kind and we had not seen before. But having said that, of course, Jagdeep Dhankar knew what he was doing, and he was keeping in mind that he had to follow the constitution. So while we were reporting every development between the state government and the governor, be it the bills, be it the letters, the universities and the different aspects of governance, there was not a single time we could report against the Raj Bhavan, because everything was done within the ambit of the constitution, provisions that he had laid down before him. But of course, the Trinamool Congress government here in West Bengal has understood that staying at a face-off with the governor will not yield them any benefit as such. Of course, political brownie points are there, because that is something that's acting like a glue for the opposition parties, because we can see that the non-BJP ruled states are all up in arms against the governors in their states. So that's something that's uniting the opposition parties to raise an issue against the central government, saying that, of course, the governors are acting as political agents here in the states which are not ruled by the BJP. But what I want to ask you here is, जैसे हमने ये भी देखा है in the past, जैसे अभी जो हमारी president हैं द्रौपदी मुर्मू, she was the governor of Jharkhand, and at that time BJP की सरकार थी government में, and she had held bills which were related to tribal land rights, and she did not pass them. तो ये भी हमने देखा हुआ है कि बीजेपी के गवर्नर है, बीजेपी की सरकार है, और उसमें कलेश नहीं बोल सकते, but there was a difference of opinion. But what I want to know is, जैसे आरिफ मोहम्मद खान हो गए, जगदीप धनकर हो गए, इन लोगों को जब गवर्नर के पोजीशन में डाला जाता है, is this also a way for these people to up their political leverage in some way? Is it like, for example, we've seen Jagdeep Dhankar then going on to become vice president. So similarly, for most people who are in that position and who have been appointed in that position by the central government, is it sort of a stepping stone for a larger role in governance later?
आप देखिए, अगर आप 2014 से नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों को ऑब्जर्व करें, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, तो जिस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट राजभवन में हुई है, उसमें आप 2-3 ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। पहला ट्रेंड है कि उस तरह के स्टेट में जहाँ पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्टेक है, बीजेपी जहाँ पर बीजेपी का फुटप्रिंट कमज़ोर है, लेकिन बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा करना चाहती है, अपोजिशन रूल्ड चीफ मिनिस्टर को हटा करके वहाँ पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, वहाँ पर जिस तरह के व्यक्ति का चुनाव किया गया है, और इसके बनिस्बत इसके पैरेलल अगर आप देखेंगे कि उस तरह के स्टेट में जहाँ पर बीजेपी अलायंस पार्टनर है या फिर बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, या बीजेपी को लगता है कि अगले 15-20 सालों में उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, उस स्टेट में गवर्नर का जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें दोनों के क्राइटेरिया में आपको आसमान जमीन का अंतर देखने को मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल बीजेपी को शुरू से लगता है कि बीजेपी वहाँ पे अच्छा कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो मुसलमानों की आबादी है, वो पोलराइजेशन की ढेर सारी संभावनाएं हैं, तो इसलिए वहाँ पर जिस तरह के व्यक्ति का गवर्नर का चुनाव किया गया, पहले केसरीनाथ त्रिपाठी जो बिल्कुल ही आइडियोलॉजी, संघ परिवार और बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी से निकले हुए नेता थे, उनका चुनाव किया गया। केसरीनाथ त्रिपाठी उतने सफल नहीं हो पाए जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशन थी। बीजेपी को लगता था कि वहां पे कोई ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो कि लीगल निटी-ग्रिटी को जानता हो और जो ममता बनर्जी को रोज परेशान कर सके। तो इसलिए धनखड़ का चुनाव किया गया, क्योंकि धनखड़ वैसे तो देखें वो जनता परिवार से आते हैं, वो बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो जनता परिवार से आए, लेकिन बीजेपी ने उनको सेलेक्ट किया ये जानते हुए कि उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो बिना डिसेंसी खोए हुए भी वो बहुत अच्छे तरीके से चीफ मिनिस्टर को परेशान कर सकते हैं। जैसे कि श्रेयसी ने बोला, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हम रिपोर्ट उस टाइम पे नहीं कर सकते। और वो जब भी ममता से मिलते भी थे तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, और दोनों के बीच में आप देखेंगे कि बड़े गर्मजोशी के साथ मुलाकातें होती थी, चाय वाय पीते थे, लेकिन वो परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए धनखड़ का वहां पे चुनाव हुआ। अब आप देखें कि उस तरह के स्टेट में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, 0.89% वोट शेयर बीजेपी पाती है। वहां पे जिस व्यक्ति का चुनाव हुआ वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। उड़ीसा में बीजेपी का स्टेक है, लेकिन बीजेपी को लगता है जब तक नवीन पटनायक हैं तब तक कोई बहुत ज्यादा करामात नहीं कर सकते। तो वहां पे जिस व्यक्ति का चुनाव किया गणेशी लाल का, वो शांत बैठे हुए हैं। दोनों स्टेट में देखें कि गवर्नर जो है मुख्यमंत्री की तारीफ भी करते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर को देखें, कई बार उन्होंने तारीफ की है। वैसे ही गणेशी लाल को देखे, उन्होंने कई बार नवीन पटनायक की भी तारीफ की है। बीजेडी और वाईएसआरसीपी दोनों बहुत मिडिल ग्राउंड मान के चलते हैं। मिडिल ग्राउंड मान के चलते हैं, पार्लियामेंट पे हर समय हर बिल पे सपोर्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि इनको नाराज करने का कोई फायदा नहीं है, पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं है, खास करके तब जब तक कि बीजेपी उस स्टेट में बिल्कुल रौंद पाने की स्थिति में हो, वहाँ के पॉलिटिकल डिविडेंड अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने की स्थिति में हो। तो गवर्नर का सिलेक्शन बड़ा सोच समझ के किया जाता है, किस तरह के व्यक्ति का कहाँ पे चुनाव किया जाए। और आप देखेंगे भगत सिंह कोश्यारी को वहाँ पे भेजा गया महाराष्ट्र में, इसलिए क्योंकि वो संघ परिवार से बिल्कुल उनका जुड़ाव रहा है। वैसे भगत सिंह कोश्यारी के उससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो भगत सिंह कोश्यारी इंटायरली डिफरेंट पर्सन थे। कभी उन्होंने कॉम्बैटिव रोल नहीं लिया, लेकिन जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद उन्हें जो इंस्ट्रक्शन मिला तो उन्होंने उद्धव सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तो उनका इंसेंटिव क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ। इंसेंटिव देखिए, जनरली उम्र के जिस पड़ाव पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो एक तरह से वो अपना पूरा पॉलिटिकल करियर पूरा कर चुके होते हैं। और पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि जब तक आप बेड से उठ पाने की न स्थिति में हो, ठीक है, नरसिम्हा राव के बारे में तो कहा ही जाता था कि नरसिम्हा राव का जब जिस तरह से चुनाव हुआ, बिल्कुल वो उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बिल्कुल ताज़ा हो गए, वो उनमें एक तरह से जवानी छा गई। तो उसी तरह से पॉलिटिकल करियर के एंड पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन फिर उनमें पॉलिटिकल एम्बिशन जाग जाता है। उनको लगता है कि हो सकता है कि कोई और पद मिल जाए, हो सकता है कि उन्हें 5 साल के बाद भी रिटेन किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें एक चीज़ आपको देखेगा उनके काम करने के तरीके में, उन्होंने किसी भी गवर्नर को सेकेंड टर्म नहीं दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट धनखड़ जिनका एलिवेशन हुआ है। इसके पीछे की ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते कि उनका एलिवेशन क्यों हुआ। उन्होंने किसी भी गवर्नर को, राम नाईक जो कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी से आते थे, वाजपेयी सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्हें गवर्नर बनाया, एक्सटेंशन नहीं दिया। केसरीनाथ त्रिपाठी उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया।
ऐसे तमाम गवर्नर को देखिए कि उन्होंने दूसरा टर्म नहीं दिया। कांग्रेस के रेजिम में ये होता था कि 2 टर्म मिल जाते थे। तो वो उनका फंडा बड़ा साफ है कि एक बार हमें तुम्हें ओबलाइज कर दिया, ठीक है, तुम पार्टी के लिए इतना काम किए हो, तुम्हें ऑब्लिगेशन इस उम्र के इस पड़ाव पे तुम्हें गवर्नरशिप दे दी, तुम सरकारों को परेशान करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आगे कहो कि मुझे और दूसरा टेन्योर भी दे दो, हमें कुछ और मिल जाए। इसमें उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ गवर्नर को हैंडल किया है। Soumya Sheshi, I want to know from your experience, how do you think this plays out on the ground in terms of how does this affect public perception? Because, this is something that the tiffs between governors and chief ministers is something that, Shankar and I were discussing. We talk about a lot in the media. There's also a lot of social media chatter about it. But electorally, or in terms of the general public, do they actually care about, this face-off that keeps happening between two important figures in the state? And, before we wrap up quickly, if you think that the governors in your states could affect the 2024 elections that are around the corner. And I'm just asking you this because opposition in both these states, and how do you think that will play out? Soumya, if you could go first. Sure. I think 2 issues lately that I think we should focus on. One is NEET. So NEET is a very emotional issue in Tamil Nadu. A series of students have unfortunately taken their lives because of the pressure that comes from this particular examination. So the Tamil Nadu government, the DMK-led government, has constantly made it very sort of public that it is against this entrance exam and has passed a bill to say so, the anti-NEET bill, right? And so every time the governor has delayed sending it across to the president, they have spoken about it. They have not gone to, a function at the Raj Bhavan just to oppose his delay on this, and so on and so forth. The second most very recent sort of event that happened, which has a communal side to it, is the Coimbatore car blast that happened about a week ago. Now, the governor, Ravi, was visiting Coimbatore at the time, just after the blast occurred, a couple of days after. He was there to inaugurate a yogic institute, a naturopathy institute, and he made a couple of statements on the side to reporters. And in that, he seems to have said there was a delay in the state government referring this case to the NIA. And in that, he made a very political point to say they didn't take this seriously enough as a terror attack. And that has played out, especially in Western Tamil Nadu, which is a communally sort of tense part of the state, playing into, in a sense, what one would consider the BJP sort of stronghold. BJP has a very strong sort of hold in Coimbatore and subsequent areas. And so this was seen as a very political point, after which you've seen the sort of reaction to call for his dismissal. So he has continuously made comments that the DMK sees as, you are on purpose taking the line of the union government in this instance. So it's also where he makes this. So the Coimbatore statement was made specifically in a BJP stronghold. And so in that sense, your second question on whether it is to do with the 2024 election, to an extent, yes, because you know exactly in which context you're making that statement, in what sort of, what you're saying will cause some kind of rift in that particular city, which is already fractured on communal lines. So that's really the 2 major issues that I see as sort of ways in which the people of the state then process this information. Sheshi, you have reported in the 2021 state elections in West Bengal, and right before that, this sort of animosity, war of words between Jagdeep Dhankar and Mamata Banerjee was at its peak. Now you say there's an interim governor, and a lot depends on who the BJP, who the central government, puts in that position later. But 2 questions. Firstly, did you see this animosity between Dhankar and Mamata Banerjee play out electorally on the ground when you were reporting? Second, do you see, if there's, someone that the TMC again considers to be a union government mouthpiece kind of put in charge of West Bengal, do you see that playing out ahead of the 2024 Lok Sabha elections? As far as 2021 is considered, I don't think electorally that really was a factor here, at least in the urban within the urban population. Rural, of course,
I mean, I don't think people even knew who the governor was if we went to the remote areas of the districts of West Bengal. But here in Kolkata, of course, even you were here during 2021. It wasn't a factor, but people were aware about the bickering, which they had not seen previously. When Gopal Krishna Gandhi was there as the governor of West Bengal, things were very different between the state government and the Raj Bhavan back then. But it had reached its peak when Jagdeep Dhankar was in charge here in West Bengal. And the narrative that the Trinamool Congress drove in was that they are being, constantly being poked by the governor. They're not getting any support from the governor. There was no cooperation. And of course, he was acting as a BJP agent, is something that the Trinamool Congress used as a narrative. And, the people were reading it constantly, was watching it. Chief Minister Mamata Banerjee is known to be vocal, so she did not mince her words when she spoke about the governor, be it within the assembly or outside when she was addressing media conferences. So for the 2021 elections, of course, it wasn't a factor because people also saw how many times the BJP MLAs would go to the Raj Bhavan, how often the LOP would be sitting and sharing a cup of tea with the governor, and how quickly the governor would act upon BJP complaints that would reach his doorstep. He would, I have never seen a governor come out outside Raj Bhavan to address the media with ample amount of BJP MLAs on the staircase of Raj Bhavan with cameras all around. It used to be usually a occasion where everything used to happen within the walls, and then there would be a press conference, or he would call in the media. But things completely changed under the Dhankars. There was also a time, Shashi, I'm sorry to interrupt you, when Babul Supriyo was gherawed in Jadavpur University, and the governor came to the university no less to rescue him, quote unquote. So that was also complete. Babul Supriyo, who's of course now in the Trinamool. Even during post-poll violence, he went and visited several areas that had, seen extreme violence and clashes after the results of 2021 elections. So that way he would reach the people. He was extremely active, and he was more than active here in West Bengal, of course. As for the next governor, absolutely no clue who that's going to be, except for probably Narendra Modi. No one really knows who's going to be the next governor of West Bengal. But of course, when that appointment happens, when a permanent governor comes to West Bengal, the fact that BJP was unable to win the 2021 elections and 2024 is around the corner will of course be a factor. Okay, Shankar, before I ask you the last question of the show, आप बीजेपी कवर करते हैं, शेयोशी, और हम सबको कोई आइडिया दे सकते हैं कौन होगा अगला बंगाल का गवर्नर? देखिए, निश्चित रूप से बंगाल का जो गवर्नर होगा वो जिसको कि लॉ की अच्छी जानकारी हो और जो कि ममता को और ज़्यादा परेशान कर सके, क्योंकि बीजेपी के सामने चैलेंज है कि जो उसकी 18 सीटें हैं कम से कम उसको रिटेन करे. बट लास्ट में आपको पूछना चाहूँगी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, एक तरफ ये नैरेटिव है ऑपोजिशन का कि बीजेपी इंस्टीट्यूशनली कैप्चर कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है, एंड दूसरी तरफ ये जो बहुत स्ट्रेटेजिकली हर जगह गवर्नर्स प्लेस किए जा रहे हैं, एज अ फीडबैक मैकेनिज्म ऑपोजिशन को परेशान करने के लिए. बिटवीन द टू, लाइक ये जो दोनों नैरेटिव्स हैं, हाउ डू यू थिंक दैट विल प्ले आउट फॉर 2024? एंड लाइक अगेन एज आई वाज सेइंग, ये क्या ज़मीनी मुद्दा है लोगों के लिए, या फिर बस हम जैसे जर्नलिस्ट इसके बारे में बात करते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम जनता को इन सब से बातों से कोई फ़र्क पड़ता. मिसेस गांधी ने सबसे ज़्यादा इस गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल 356 को मिसयूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ 1980 में मिसेस गांधी चुन के आई, और उसके बाद फिर आते ही उन्होंने 9 सरकारों को बर्खास्त भी किया. तो इसलिए जनता को इन सब मुद्दों से कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता. जनता को जो अपने मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, जो उसकी ज़िंदगी के, उसके लाइवलीहुड के रोज़ के मुद्दे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है. ये सब देखिए एक नैरेटिव बनाने के लिए ठीक है कि गवर्नर जिस नैरेटिव को टो करते हैं. वेस्ट बंगाल में चूंकि बीजेपी का नैरेटिव है कि वहाँ लॉलेसनेस है, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, तो गवर्नर धनखड़ ने उस लाइन को ही टो किया और हर जगह वो कहते थे भाई यहाँ पॉलिटिकल किलिंग हो रही है. वैसे ही आप केरल में देखें कि भाई बीजेपी की जो नैरेटिव है कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो कैसे मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग केस हो या तमाम वैसे केस में वहाँ पे पोलराइजेशन हो, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान उस लाइन को टो कर रहे हैं. तो वो एक तरह से देखें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, पोलराइजेशन को आगे बढ़ाने में वो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जनता उस
पोलराइजेशन में भले फंस के वोट दे दे बीजेपी को, लेकिन वैसे डायरेक्टली कौन गवर्नर है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहे हैं, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह से उसको फायदा पहुंचाता है क्योंकि वो पोलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। वो इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके उनके लोगों को बिठाता है जो इंटेलेक्चुअली उस नैरेटिव को आगे क्रिएट करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेंगे। तो ये सब तरीके हो सकते हैं, लेकिन आम जनता को बाई एंड लार्ज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Thank you so much, Shankar. Thank you, Soumya, Shirshi, for joining us. That was today's episode of Political Adda. We hope you enjoyed the show. Please do keep your eyes out for this show every week, where our political team will be discussing and dissecting an important political issue. Thanks for watching.